if you have done any project or you attended any conference recently. Yes. Yes, sir. Sir, my name is Sultanaduk. I am from West Bengal. I have done my graduation and post-graduation in Kolkata. Done my post-graduation at Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur. And in 2021, I have completed my MSc. Done a project in astrophysics and after that I attended a astrophysics school, that is summer school in Aris, Nainital in 2022. And my research interest is astrophysics and quantum information. So I didn't hear, what is the specialization? Sir, my specialization was condensed matter physics. Condensed matter physics. Okay. So Sautan, can you tell me what is the definition of lattice? What is direct lattice? Lattice, actually lattice is a mathematical concept of atom. How we think atom are situated on a material. That is mathematically we are mathematically we are calling in a book that is a lattice. That is an imaginary point of atom actually. So can you show with some equation or can you draw this lattice? Okay. Yes, sir. The lattice means I am asking about Brevis lattice here. Okay. Okay. So how to represent a lattice mathematically? Can you show me? Yes. Sir, yeah, you drawn some points only. Okay. Can you show mathematically how can I represent a lattice mathematically? Okay, sir. Mathematically, R is equal to something n in yes, by translation vector. Yes, that's what I'm asking. Okay. So ये Brevis lattice और non Brevis lattice में क्या difference होता है? Can you give me an example of non Brevis lattice? Yes, sir. Actually, Brevis lattice is only one lattice point. Okay, you just give me example of non Brevis lattice. Yes, sir. A non-Brevis lattice example is a diamond structure or graphene. Okay, diamond structure is a non-Brevis lattice. Okay, leave it. Now you tell me, can you derive the density state of one-dimensional atomic chain of one-dimensional chain of atom? Yes, sir. Yeah, yes, just drive and show me. So in one dimension, the number of states we can represent as total length, that is 2L by delta K.
sir, Yeah, it's fine. is Okay, this fine. Okay, good. So can you now tell me something about dielectric materials? What is dielectric polarization? dielectric polarization? Hmm. uh, Sir, when we give some external electric field on a material, then material का जो positive and negative part है वो slightly displaced होता है, and inside the material there is an electric field which is occurred uh, just opposite to the external electric field direction. Yes. This is the polarization incident happens inside the material. So what is the definition of polarization? Actually, mathematical definition. Polarization is the dipole moment per unit volume. Okay, good. Okay. So can you tell me something about what is complex dielectric constant? Why do dielectric constants complex? Actually, susceptibility. Sorry, sir. Can you repeat the What is complex dielectric constant? complex dielectric constant? Yeah. So when we get complex dielectric constant, Complex dielectric constant actually we get from conductor type material. no, suppose if I give you DC source and you supply you measure the dielectric constant, that dielectric constant will be real or complex with DC source. DC source. How to measure dielectric constant? Tell me, how can we measure dielectric constant of a material? Okay. Okay, so just read it. Okay, how to measure dielectric constant. Okay, and what is the effect of AC and DC? How they differ? How material behave in AC field and DC field? Okay, so okay, Arun sir. Hello, hi Saturn. Hello, sir. So, are you able to hear me? Yes, sir. Okay. So, can you please tell me what is difference between fermions and bosons? Fermions and bosons are they are both are quantum particle, but the bosons are obey Bose-Einstein statistics, and fermions are obey Fermi-Dirac statistics. And fermions have bosons are integral spin particle, and fermions are non-integral spin particle. Okay. So, if we will lower the temperature, then boson will come to the at the ground state level. All the boson can come to the ground state level. Yes. Is that statement is true or false? Yes, sir. At some specific temperature, At some specific temperature or some critical temperature, below that everyone is come to the ground state. Yes, sir. This is called Bose-Einstein condensation. हाँ, so क्या ये fermions के लिए भी possible है? No, sir. Fermions के लिए possible नहीं होगा, क्योंकि fermions is only मतलब same state में fermions इतना सारा fermions नहीं आ सकते. ये तो यहाँ पर अगर ऐसा है कि हम अगर टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली कम करते जाएं तो fermions का क्या होगा? फाइनली व्हाट विल हैपन? fermions हाँ, एक्चुअली डिपेंड ऑन मटेरियल. अगर ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है तो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर अदर मटेरियल होगा तो अलग मटेरियल शो करेगा. अगर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल हो तो वो फाइनली fermions दो fermions मैं कुछ इस ढंग से समझना चाह रहा हूँ चीजों को कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गैस है, एक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन गैस है, तो अलग अलग स्टेट पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना? yes, और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा, दूसरा और ऊपर जा सकता है, एक्साइट होता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना? yes. अब मैं उल्टे डायरेक्शन में टेम्परेचर को कम करना शुरू कर रहा हूं,
हाँ लगातार कम करता जा रहा हूँ, जैसे आपने बोजॉन में कम किया वैसे इसमें भी कम करते जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री थ्योरेटिकली पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यस सर। तो अगर ये फेज ट्रांजिशन का कोई प्रॉपर्टी अगर शो करेगा, नहीं तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही स्टेट पर फ्रीज करके रहेंगे, ऐसा कुछ? अगर फेज ट्रांजिशन होगा उस मटेरियल का तो फेज ट्रांजिशन होगा, नहीं तो ओके, सो क्वांटम मैकेनिक्स लो टेम्परेचर पर ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है या फिर हाई टेम्परेचर पर? कई बार अगर आप क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच करते हो तो लो टेम्परेचर पर ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है, हाई टेम्परेचर पर? सर ऑब्वियसली लो टेम्परेचर पर। ऑब्वियसली। ओके, गुड, वेरी गुड। मुकद्दर सर। Hi, sir. यस सर। So I'll ask you question from condensed matter physics, ना आपका स्पेशलाइजेशन था। तो सपोज मान लो आपके पास एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, और उसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्या होगा? रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा ज्यादा होगा। सेमीकंडक्टर पर। हम्म, अच्छा सर, रेजिस्टिविटी कम होगा कम होगा, क्यों कम होगा? क्योंकि सर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पर जाएगा। उसमें क्या होगा? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पर आ जाएगा एंड कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी ड्रॉप करेगा। Conductivity increase means your current is increasing, right? यस सर। So obviously resistivity is increasing. Very good. Okay. Now suppose can you plot that binding energy per nucleon versus mass number curve? यस सर। सर ऐसे कुछ। Okay. Will it start from zero? किस न्यूक्लियस का जीरो होता है? नहीं, जीरो से नहीं होगा। ओके, ये कार्ब अपने दो लो मास नंबर के लिए दो पीक्स दिखाया, ये किसके लिए है? नहीं सर, एक्चुअली और भी पिक्स होगा, मतलब ऊपर से जिसका। चलो लो मास नंबर के लिए किस किसके लिए पीक आते हो बताओ आप। सर हीलियम के लिए होता है और टू 28 चलो मैं बता देता हूँ, हीलियम के लिए होते हैं, कार्बन के लिए होते हैं और ऑक्सीजन के लिए होता है, ठीक है। अब बताओ इन तीनों के लिए क्यों होता है? क्योंकि सर इसका एक नंबर का एक नेम होता है, मैं भूल गया। तो वो हाँ, मैजिक नंबर कार्बन का मैजिक नंबर होता है कार्बन कार्बन 612, राइट? प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, क्या ये मैजिक नंबर है? नो। ठीक है, आपको ये पता चल रहा है ना, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना सारे इवन नंबर है, देन यू आर गेटिंग पीक। देखो हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। अब बताओ इवन नंबर के लिए पीक क्यों आ रहा है, आप तो बता सकते हो ना? हाँ ये सर, क्योंकि इसका जो जब एनर्जी सॉरी जब ये कोई एनर्जी स्टेट पर जब रहेगा तब ज्यादा There's a one term called pairing term. Have you learned this? yes sir. Binding So energy, when you have all protons and neutrons are paired, you will have large binding energy. It means Yes, binding sir. energy per nucleon will also be large. That's why you are getting peak for even nuclei. Okay. Now, Otherwise, what is the cause of nuclear fusion?
न्यूक्लियर फ्यूजन क्योंकि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए होता है। कहाँ पे होता है, कौन सा मास नंबर के लिए होता है? फ्यूजन हम्म, फ्यूजन लो मास नंबर के लिए होता है, ओके। फिशन कहाँ पर होता है? फ्यूजन हाई मास नंबर के लिए होता ठीक है। अब सपोज मान लो, आपका कार्ड दिखाओ मेरे को, दोबारा दिखाओ। अब सपोज मान लो आयरन के बाद जो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कार्ब है, इसको पूरा फ्लैट कर दिया आपने, समझ रहे हो? फिशन जो बाइंडिंग, सॉरी, आयरन के बाद जो कार्ब है पूरा फ्लैट कर दिया आपने, अब क्या न्यूक्लियर फिजन पॉसिबल है? है। नो सर, नहीं होगा, भाई बिकॉज लास्ट नंबर भी हायर हायर पर है। मतलब सभी जो हायर मास नंबर है वो सभी लाइक आयरन इक्वल टू F इक्वल टू 56, तो वो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर सैचुरेट कर गया, तो इसलिए उसका स्टेबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। very good, but you can give answer in other way also, that will be more satisfactory. Suppose you know that Q value, right? Yes sir. Fission and fusion both are actually spontaneous process, and for spontaneous process Q value क्या होती है? पॉजिटिव होता है, राइट? हाँ yes, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, and Q value you can calculate in terms of binding energy of the product minus reactant. अगर आपका कार्ब आपने फ्लैट कर दिया, you will get 0 Q value, can prove that, and 0 Q value के लिए spontaneous process will not possible. Q value in terms of binding energy you can define, binding energy of the product minus reactant. Your fission and fusion both are spontaneous process, right? Yes sir. Fission and fusion both are spontaneous process. For that, Q value should be positive. If you are making flat card, your binding energy will be 0, है ना? And that will not be possible. ना, थोड़ा सोचो आप इसको. That is from my side. Yes. So, Kunal, you want to ask a question? Yes, sir. Hi, Southern. Hello sir. Yeah, as few minutes earlier, Atul sir asked you a question about the spin of fermions and bosons. I heard you, and you said fermion has integral spin and bosons have non-integral spin. Do you think there is some problem in this statement? Yes sir. No, bosons have integral spin and fermions have non-integral spin. Fermions have non-integral spin. Yes sir. मतलब Are you non-integral मतलब 2/3, 1/2 ऐसे कुछ. 2/3 also can be the spin of fermions. No sir, 2 by मतलब ये example दे रहा हूँ, half या You said 1/2 and 2/3. So are you confident 2/3 can also be the spin of fermions? No sir, 2/3 नहीं होगा, 3/2 होगा. Exactly. So the main thing is the fermions have the integral half spin. Okay. Yes sir. And bosons have integral spin. Okay, fine. So one more question. Can you please write the expression for the Fermi energy for the N-type semiconductor? क्या sir? fermion? Fermi energy expression for the N-type semiconductor. The relation between the Fermi energy and means conduction band energy. There's a relation which includes the I'm doing some simpler for position of Fermi level in N-type. Okay. Do you remember the expression for level? Some familiar for you. There's an EF and EC relation with the temperature. If you remember, then kindly write it down on your notebook. Yes, yes sir. I want to ask some questions from there. Yeah. Sir, I think NC equal to N0 e to the power EC minus EF by KT. Yes, EC is equals to what is it? Please say again. Can you please write it down? Can you please write it down? yes sir. It is not visible. It's not visible. Your top one. Okay. Okay, say orally. Say. I understand. Say. What are you saying? NC equal to N0 e to the power EC minus EF by KBT. Where EC is the conduction band energy, EF is the Fermi level.
energy. Okay. So can you please tell, if we take temperature, if we put the temperature on 0 Kelvin, okay, then the position of Fermi level, where it is like? Temperature is 0 Kelvin. Yeah. I think at the mid position. At the mid you saying that it will lie on the energy gap, midway. Yeah. Yeah. At temperature N type, zero Kelvin. asking N type, not interesting. N type में कहाँ रहेगा? I'm asking about N type semiconductor. At T is equal to 0 Kelvin. See, you tell us the expression. Just put the T is equal to 0 there. See what happens. Sir, is equal to 0 e to the power infinity. So infinite तो नहीं होगा. Okay, no issue. Okay. There's a relation, okay, which include, I'm telling you mathematically, that is Fermi energy is equal to EC minus KT ln. There's a ratio of concentration level, means NC upon ND. Okay. So if you put temperature is equal to 0 Kelvin there, then EF will be equal to EC, means Fermi level lies in the conduction band. Fine. So 2 or 3 main means further we can conclude from here. If you increase the temperature, what will happen? If we increase the doping, what will happen? So kindly go through all this stuff, okay? Because as you said, your research area of interest is condensed matter. The interviewer directly go to the semiconductor. There's a main very big, means you can tell, topic of the material science, semiconductor. Okay, so kindly go through all this stuff. And one last question I want to ask: can you tell me about the tight binding approximation? What is that tight binding approximation? Sir, मैं भूल गया थोड़ा. Okay, sir. Okay. That's right. Okay, Satan. Okay. Okay, you are replying some questions. Okay, but you need to prepare more. So you go through the main topics. Okay, and prepare well. Okay, all the best. You can leave now. Puneet is there. Yes, sir.